Okay, so here we are, my favorite section for each episode because Ask TG is the place, guys, जहाँ पे I try answering your questions and it is such a bridge between us जहाँ पे आप अपने सवाल पूछते हैं and मैं मेरी तरफ से कोशिश करता हूँ जवाब देने की. This week again we have some interesting questions. Let's see कि वो questions क्या हैं and I'll try answering them. Hi Technical Guruji. When shooting a video, I keep getting rolling black bars on my screen or video. How should I stop it? No, nothing wrong with your camera. In fact, nothing wrong with anything altogether. The simple setting you need to adjust is of your frame rate. Basically, in India, if you know, the electricity that we have is running at 50 hertz. अब एसेंशियली अगर आपने कैमरा इंडिया में यूज़ करना है सो यू नीड टू सेट दैट कैमरा टू पैल लाइक एसेंशियली रिकॉर्डिंग एट 25 fps या फिर इन मल्टीपल्स ऑफ 25 सो यू कैन इन फैक्ट इवन सेट इट टू 50 fps लेट्स से एंड द फ्लिकरिंग और द ब्लैक बार्स और वट एवर यू आर गेटिंग इट विल एसेंशियली गो अवे. माय क्वेश्चन फॉर यू इज व्हिच फोन हैज द बेस्ट कैमरा फॉर द एस्ट्रोफोटोग्राफी? सी I would prefer not give you an exact answer or an exact model because it depends. It varies a lot. Even if you have the best camera but you're not at the best location, you would not get the desired results. या फिर अगर हम बात करते हैं कि let's say you don't have the right equipment to go along, आपके पास में अगर tripod नहीं है तो आपको हो सकता है सही results ना मिले. So I think all modern phones, they are really doing good in terms of low light photography or in fact even astrophotography. All you need to do is to control that camera the right way, adjust to the right settings and you would get the desired results if you're at the right location जहाँ पे कोई light pollution नहीं है and you can see the stars loud and clear. Okay, pick anyone you like because more or less in the budget side of things all these fitness bands or you call smartwatches, they are essentially same, doing similar set of things, so more or less the experience is again in the same ballpark. So maybe a brand you prefer or maybe a design that you like over some other one, you just go and pick that. Essentially if I talk about the range of 1500 2000 2500 rupees, आपका जो एक्सपीरियंस है ना वो लगभग एक जैसा ही रहेगा. अगर आप हायर साइड में जाते हो तो देन यू हैव फिटबिट, यू हैव गार्मिन, यू हैव एप्पल, सैमसंग, तो वो एक अलग चीज़ है. बट बजट रेंज में मोर और लेस द एक्सपीरियंस इज काइंड ऑफ सिमिलर अक्रॉस ब्रांड्स.